ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So maybe just now once anybody Uddhavananta, Udavananta, Leela Vilastu, somebody can just confirm if everybody is able to see me well and everybody is able to hear me well. I'm trying to speak a little softly. Okay, so even though I'm speaking a little softly, I'm able to, I'm audible, right? Okay, good. So Hare Krishna, welcome everybody, all devotees. Because of this online forum, I'm not able to personally greet each and every devotee present here online. But please understand my heart. I really want to embrace everybody present here and those who have been able to join as well as those who have not been able to join. But this is on forum wherein we can connect. And what we will try to do here is, following Devavanand Prabhu's suggestion, what we will do is that we will try to stick this, I'll keep my talk latest till 5:40 or so, because it is exactly 4:40 right now. Exactly at 5:40 I will stop speaking. Even if the topic is not complete, we will take the next part of the topic next week. But I will stop speaking so that we can have more interactions maybe. Right? We can have more interactions and then we will try to end by 6:10 like that. Okay? Hope that sounds okay. So with that, let's begin. So as I had said, the topic of today's meeting is our spiritual journey from doubt to faith. So as you all know, we have heard enough about how Bhakti Yoga is the topmost process. In Bhagavad Gita, Krishna talks about Jnana Yoga, Karma Yoga. Karma Yoga also has Sakam Karma Yoga, Nishkam Karma Yoga, Dhyana Yoga, Jnana Yoga, all these things are there. But ultimately we have now understood that how Bhakti Yoga is the topmost in the ladder of the yoga system. And Bhakti Yoga is such a special yoga. So first of all other yoga processes are incomplete unless they culminate in Bhakti Yoga. That's point number one to be understood. And point number two is that one need not gradually go through, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga and then graduate to Bhakti Yoga. Rather, one can actually take the elevator, take the lift of Bhakti Yoga and, from the beginning itself practice Bhakti Yoga and go to Bhakti Yoga. So Bhakti Yoga is such a special thing. So somebody has to mute their mic, maybe Shekhar Prabhu who just joined. Yeah. So Bhakti Yoga is such an express elevator that, even in the beginning we can practice it and ultimately the culmination is also Bhakti Yoga and the process is also Bhakti Yoga. Right? So we have heard Prabhupada say several times that how Bhakti Yoga is the means as well as the goal. And we all are so fortunate that by the causeless grace of Srila Prabhupada, we all have got access to this Bhakti Yoga. So in 11th canto of Srimad Bhagavatam, where this Uddhava Gita comes, so we know there are so many Bhagavad Gita, so many Gitas actually. So Bhagavad Gita is one song of the Lord. Similarly, there is Uddhava Gita, there is Gopi Gita, there is Brahmar Gita. All these there are various sections in Srimad Bhagavatam which have been also called as different Gitas, which are there. There is Rudra Gita. So in one of the sections of Bhagavatam which appears in 11th canto, there comes Uddhava Gita. In Uddhava Gita, Lord Krishna is giving transcendental knowledge to Uddhava. In that, in one of the shlokas, which is 11th canto, 19th chapter, shloka number 2, so it is 11.19.2, Lord Krishna is telling that how
after cultivating knowledge, you have to arrive at the point of Bhakti Yoga. And once you have arrived at the point of Bhakti Yoga, nothing else is needed, because there is nothing higher than this, right? It's not that now later, now you have to again abandon Bhakti Yoga to get to something else. It's not like that. So Lord Krishna is telling that Bhakti Yoga is highest than anything else. And in that connection, he is telling 5 things about why rendering devotional service to Krishna is the most supreme thing. He is telling 5 things. One he is telling is Eveshtaha. So let me try to recite that shloka. Let me see, 11.19.2. So it is 11.19.2. The shloka says, Jnaninastu eveshta swartho hetushta sammatah sarvaschaiva pavarascha nanyortho madate priyaha. So it says, so Krishna, so let me read the translation. Translation says, for learned, self-realized philosophers, I am the only object of worship, the desired goal of life, the means for achieving that goal, and the settled conclusion of all knowledge. Indeed, because I am the cause of their happiness and their freedom from unhappiness, such learned souls have no effective purpose or dear object in life except me. So this is very interesting here how Lord Krishna is telling 5 characteristics of how Bhakti Yoga is the supreme process. So characteristic number 1 which he is telling is Eveshtaha. Eveshtaha means Krishna is telling, I am the supreme object of worship. Eveshtaha. Then he is telling Swartha. Swartha means I am the highest expected result. Krishna is telling in that shloka, I am the highest expected result. Like among all the things to be achieved, what is the best thing to be achieved? The best thing to be achieved is the lotus feet of Krishna. Then Sammataha, I am the means of realization. How to achieve me? Through means. You have to please me, you have to love me. And then he is telling 4th point is Swarga. By Swarga, Krishna here is referring to the cause of happiness of devotees. So Krishna is telling that I am the cause of happiness of devotees. And Apavarga, I am the cause of removal of sufferings. I am the cause of removal of unhappiness. Right? So it is very interesting that how Krishna is telling these 5 things to indicate that how, therefore, rendering loving devotional service to me is the topmost thing which anyone can ever do. And now it is our great fortune that we have got this gift of Bhakti Yoga. Even though most of us were not looking for it. Like most of us were not like His Holiness Navyogendra Maharaj, or His Holiness Bhakti Tirth Maharaj, or His Holiness Radhanath Swami Maharaj, or His Holiness Gopal Krishna Maharaj, or so on and so forth, who have been actually seeking, a guru, or who have been seeking for some higher truths in life. Most of us have actually not been seeking that. Maybe we had some questions, but we were not very sure about those questions, and life was going on. We never ever left some things in the search of truth, in that sense. So therefore it has kind of come to us just as a gift, causeless gift which we have received. So I was hearing one lecture of some devotees, and they were telling that how the gift of bhakti has been compared to gold. So there is gold and there is coal, right? Coal means कोयला. तो जो कोयला होता है, नॉर्मली आप देखोगे कोयला को जब मेजर करते हैं तो टन्स में मेजर करते हैं, और जब कोयला को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो मालगाड़ी में ले जाते हैं, और मालगाड़ी में कोयला कुछ कोयला गिर जाता है, कोई कोयला कोई चोरी भी कर लेता है, तो कोई ज्यादा उतना उसको बॉदर नहीं करता है ना, बिकॉज कैन समबडी जस्ट म्यूट पुरुषोत्तम प्रभु, आई थिंक कोई तो किसी को म्यूट करना है. हाँ. So, the gift of Bhakti Yoga has been compared to gold. So, I was trying to contrast between gold and coal, कोयला, सोना और कोयला. कोयला को जब मेजर करते हैं तो टन्स में मेजर करते हैं, उसको जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो मालगाड़ी में ले जाते हैं, और मालगाड़ी में जब ले जाते हैं तो कुछ कोयला गिर जाता है, कोई कुछ चोरी कर लेता है, तो ज्यादा उससे पीपल आर नॉट दैट मच बॉदर्ड बाय इट. ठीक है, थोड़ा बहुत कोयला इधर चोरी हो गया, क्या फर्क पड़ता है, 5-10 रुपए का होगा. ऑन द अदर हैंड यू सी हाउ स्पेशल ट्रीटमेंट गोल्ड इज गिवन. ज्वेलरी शॉप में अगर एक छोटा सा पार्टिकल भी गोल्ड का अगर गिर जाता है ना, तो उसको वो लोग संभाल के रखते हैं, फिर उसको दे मेल्ट इट एंड देन दे मिक्स इट and then they do whatever, right? So it is measured in milligrams. Gold is measured in milligrams, and every people are sensitive or careful to handle every particle with care of gold. On the other hand, coal is like nobody cares. So similarly, this Bhakti Yoga which we have got is like gold. We have to handle it very, very carefully. We have to be conscious about what we have received. So we have received this gift which, as we have seen in Chaitanya Charitamrita, Brahmand Brahmite Kono Bhagyavan Jeev, Guru Krishna Prasad Paya Bhakti Lata Beej.
We have to actually realize, we have to try to realize this point. It's just because we have got it cheaply does not mean it is cheap. That is the causeless mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya. That Patra Patrana Dekhi is not seeing whether we are qualified or not, and he has given this greatest gift to us, but it is our responsibility on the strength of hearing from Guru, Sadhu and Shastra. On the strength of hearing from Guru, Sadhu, Shastra, it is our responsibility that we understand the value of what we have got. And so just like, imagine we are traveling in a train, और मेरे पास एक सूटकेस और एक हैंडबैग है. हैंडबैग में मैंने 4-5 लाख रुपया कैश रखा है. जस्ट इमेजिन कि हैंडबैग में 4-5 लाख रुपया कैश रखा है और ऊपर वाले बर्थ में मैंने हैंडबैग रख दिया है. तो नाउ इन द थ्रूआउट द जर्नी विल आई बी केयरलेस दैट अरे बाप रे वो बैग किधर रखा मेरे को याद ही नहीं आ रहा है. नन ऑफ अस विल डू दैट बिकॉज वी हैव केप्ट सम 5-10 लाख रुपीज कैश इन इट, कैश और लेट्स से सम गोल्ड और व्हाटएवर ज्वेलरी. कैश पकड़े, इतना ट्रैवल करेंगे तो पकड़े भी जा सकते हैं, बट लेट्स से व्हाटएवर. सो in the entire journey, will we be so absent-minded that we don't even remember where we kept our bag? No, we will be extra careful, extra cautious to what to speak. We have kept our bag, but rather every 5 minutes or every 10 minutes we will be checking. सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कोई है नहीं उधर आसपास. Okay, everything is fine. Like that. Similarly, we have got this great gift of Bhakti Yoga, which is like the precious gold and diamond. So in the entire long journey, it's a long journey. Even this life is a long journey, what to speak of many lives. So in this life, at least in this life, we have to time and again introspect, and we have to understand, sab theek hai na, am I following the right map? Am I achieving the right milestones? Am I going in the right direction? And do we have some lighthouse? So in any journey, we need a map. In any journey, we need a compass. In any journey, we need to know milestones. In any journey, we need to have lighthouse, that okay, udhar jana hai, Dhruv Tara udhar hai, pole star udhar hai. Yeah, if you have seen ocean, yeah, Bombay mein India Gate ke paas, whatever, the India Gate, negative of India, ke aas paas, if you see dur se dekhoge aap to ye lighthouse dikhta hai, so ships understand, okay, this is where we have to proceed. So in any journey, we need these things. So similarly, in a spiritual life also, in the journey of spiritual life, let us try to understand what are the milestones, which we will come across, and which we should be aware of, so that number one, we can understand where we are, and number two, we know where we have to go, and we can do the needful, we can adjust our direction accordingly, and so on and so forth. So just like these days, whenever anybody travels to any place, we always switch on our GPS, Google Maps, which works using GPS, Global Positioning System. Similarly, we need something called as SPS, Spiritual Positioning System, and that is, SPS should always be on. So that, like those of you who travel in cars, by, referring to Google Maps, you will be able to relate to this example, that when we go, वो arrow आता है, और कभी-कभी, वो हम लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं, तो वो बोलता है यहाँ से U-turn लो, go here, go there, like that. The shortest path is here, and so on and so forth. So similarly, 24/7, if our spiritual positioning system is on, then we will make sure that we will be successful in this spiritual journey. And I would also like to share one small incident, from our recent Pandharpur Yatra. So along with Dwarkadish Prabhu and his group, we all went to this Pandharpur picnic, Pandharpur Yatra, and there we were kind of, for those 2-3 days, we were completely immersed in the glories of Lord Vitthal. So many pastimes of Krishna and Rukmini we had discussed. So one of the points which we discussed there was, if you notice, Vitthal Bihari Prabhu may acknowledge it very, very graphically, that if you notice that Lord Vitthal, उनका तिलक जो होता है वो गूगल के मैप में जो लोकेशन होता है ना, टारगेट, द मार्कर, the pickup point or the destination point. So the tilak of Lord Vitthal is like that marker. So we, some devotees were discussing that we should always remember that in our map, what is the destination? The marker, the destination marker is Lord Vitthal. Of course, not his head, but his lotus feet. थोड़ा ऊपर हो गया marker, but whatever. So so we can always remember that in our spiritual journey, we always need some kind of a map and an understanding of milestones, so that we don't take the greatest gift which we have got cheaply. Like this analogy which I talked about of the man traveling with lot of cash. He will not be careless. He will not be careless about रख दिया भूल गया, नहीं, वो regularly check करेगा सब ठीक चल रहा है कि नहीं, because it's the most precious gift we have got. So let us understand our own lives also. And see, we will be discussing various stages, okay, in our spiritual journey. We will be discussing various stages, and it may appear that, okay, we are not at stage 1, we are not at stage 2, we are maybe at stage 3 or stage 4,
but still you will appreciate that even though we may be at stage 4 or stage 5, at times we also exhibit characteristics of stage 1. We also exhibit characteristics of stage 2, because our bhakti is not firmly fixed right now. We are not at Nishtha platform. Since we are not at Nishtha platform, so just like in the daytime, right? Just like we say that, can you say that somebody is in mode of goodness? You can't say that. So nobody is in completely in goodness. Somebody is in mode of goodness for some time, mode of ignorance for some time, mode of passion for some time, and then there's several mixtures, right? Just like Prabhupada says that there are 3 primary colors, red, green and blue. These 3 primary colors are mixed to give various different colors. Similarly, it's not that, there is one person is completely in one mode. No, at different times of the day, according to different events and circumstances happening in his life, he may be exhibiting different modes. He may be under the influence of different modes. Similarly, our time of the day, morning is goodness, daytime is passion, evening, night is ignorance, right? Similarly, though we discuss these various stages of spiritual journey or spiritual life, and even though we may relate ourselves to fitting into one particular stage, we will also see that, it's not necessarily it's not that we are kind of like done with the previous stages. Sometimes we have to also see, wait a second, I am exhibiting one characteristic of this stage and I am exhibiting one characteristic of this stage. So whatever it is, it helps us to understand where we are and how far we have to go, and whether we are going in the right direction or not. So the first stage, which everybody, in fact which by default everybody is in, is called as a stage of denial. Stage of denial. Denial मतलब भैया मेरे को स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करना है, आप लोग करिए, बहुत अच्छी बात, like that. That is the stage of denial. Each one of us at some point in our life, we were actually like that. We have nothing to do with Krishna consciousness, we have nothing to do with spirituality. This stage is called as that you don't want to practice Krishna consciousness, right? And this stage is characterized by ignorance. Why does this happen? Why are people in general in denial of Krishna consciousness? Because of ignorance, because of avidya, agyan. And it is said that Agyan has these 5 characteristics. 5 characteristics. I am not talking about the technical thing which we discussed last time, the various kinds of, Moha and Mahamoha and Tamishra and Antamishra. We will not discuss that, but we will discuss more from practical perspective of what are the symptoms of somebody who is in ignorance, in that sense. So it is said that there are 5 symptoms which can be memorized using this acronym called blind, So when we are in ignorance, what happens? We become blind. That's how we can remember. So B-L-I-N-D, blind. So B stands for blinded from reality. Please note, what are we discussing? We are discussing the very first stage, which is the default stage which everybody is in, wherein he just does not want to practice Krishna consciousness. And why that happens? Because of avidya or ignorance, right? And we are seeing there are 5 symptoms of that ignorance. What are those 5 symptoms? We will see them through our acronym called B-L-I-N-D, blind, because of avidya one becomes blind, right? So B means blinded from reality. He is not able to see the reality. Each one of us also, before we came to Krishna consciousness, before we attended the Discover Yourself course or whatever courses we have taken as our very first course, we were not able to see the imminent death. So we have heard that example of a बकरी, जो एक बकरी एक कसाई के घर में 2-3 बकरी आगे बंधी रहती है और उसको वो घास खाने को मिलती है, और जो बकरी घास खा रही होती है शायद उसको लग रहा होता है कि अरे वाह कितना मैं आई एम सो लकी, आई एम सो फॉर्चुनेट यार मैं घास खा पा रही हूँ अच्छे से, ये देखो बाकी बकरी जो बेचारी कितनी दुर्भाग्यशाली है, घास नहीं खा पा रही है. लेकिन इस बकरी को ये नहीं समझ में आ रहा है, वो रियलिटी नहीं देख पा रही है. क्या रियलिटी नहीं देख पा रही है? कि आज मैं घास खा रही हूँ लेकिन कल मेरा गला कटने वाला है. सो पश्यन अपनी न पश्यति, देख के भी नहीं दिखता है. लाइक युधिष्ठिर महाराज इज टेलिंग टू यक्ष, दैट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग. हम देख रहे हैं सब मर रहे हैं, पर हमको कहीं ना कहीं लगता है हम नहीं मरेंगे. सो दैट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ अविद्या, ब्लाइंडेड फ्रॉम रियलिटी. अपना रियलिटी नहीं दिख रहा है. Yeah, we can also say it's not only about death, it's also about sufferings, it's also about birth, old age, disease, death, perceiving them as real problems of life. We are not able to see the real problems of life. People are more worried about नल में पानी नहीं आ रहा है. नल में पानी नहीं आ रहा है is indeed a problem which has to be addressed. But what is the most important problem which needs to be addressed in human form of life? Birth, old age, disease and death. Which any other species cannot address that problem. So that is B. Then comes L, the next aspect of ignorance. That L means longing for material happiness. जैसे हम बोलते हैं ना तृष्णा, हैंकरिंग फॉर मटेरियल हैप्पीनेस. वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अविद्या वी आइडेंटिफाई अवरसेल्व्स विद बॉडी एंड देयरफॉर वी वांट टू परस्यू सेंस ग्रेटिफिकेशन, वी वांट टू परस्यू मटेरियल हैप्पीनेस. एज गोविंद दास कविराज
says in that Bhajahu Remana, Vifale sevinu kripana durjana chapala sukha labalagire. For some sukh, chapala sukha labalagire, just for some small samples of sukh here and there, what are we doing? Vifale sevinu kripana durjana. You know, we are just endlessly and tirelessly serving the miserly people, you know, and for the fake currency of Maya. एक बार किसी एक यात्रा में आज राधा गोपीनाथ प्रभु या श्यामानंद प्रभु एक बहुत अच्छा एनालॉजी दे रहे थे कि जब हम माया की सेवा करते हैं तो भी हमको वेतन मिलता है, जब कृष्ण की सेवा करते हैं तब भी हमको वेतन मिलता है। जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो क्या वेतन मिलता है? वेतन मीन सैलरी। जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो जैसे वो किसी ने बोला है ना, कृष्ण प्रेम विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करो मोरे देहो वेतन प्रेम धन। So when we serve Krishna, what vetan we get, what salary we get the salary of Krishna Prem. That's the salary we get, right? And when we serve Maya, we get salary, but unfortunately Maya cheats us. How Maya cheats us? क्योंकि वो असली नोट का सैलरी नहीं देती है, वो नकली नोट का सैलरी देती है। अब इमेजिन करो आप अपने कंपनी में काम करते हो और ये ऑनलाइन का जमाना नहीं है, बैंक ट्रांसफर का जमाना नहीं है और आपको ऐसा कैश में सैलरी मिलता है। जस्ट इमेजिन, अभी एक बॉस क्या करता है, आपको कैश में सैलरी देता है और वो नकली नोट है सबके सब। तो अभी देखो दो बात हो रही है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो वो नकली नोट से आप कुछ खरीद नहीं सकते, मतलब वहां कोई सुख नहीं है। दूसरा, पुलिस पकड़ लेगी और डंडा मारेगी। तो नॉट ओनली माया हैज आवरणात्मिका शक्ति, इट आल्सो हैज प्राक्षेपात्मिका शक्ति। सो माया कवर्स द रियलिटी, आवरणात्मिका शक्ति, एंड माया बीट्स अस, एंड देन माया आल्सो कवर्स द सफरिंग आल्सो, सो लाइक दैट। सो माया गिव्स फेक करेंसी एंड देन वी आर बीइंग चीटेड बाय द फेक करेंसी ऑफ माया। And Bhakti Vinod Thakur says in that, Ati tuchha bhoga ashe bandi hoy maya pashe. Ati tuchha bhoga ashe, किस भोग की आशा के लिए? अति तुच्छ, एकदम थोड़ा सा छोटा सा भोग की आशा के लिए बंदे हुए माया पाशे। We all have agreed ourselves to be bound by the ropes of Maya. What misfortune. So that is the second symptom of avidya, longing for material happiness. Agyan, second symptom of agyan. थर्ड सिम्टम इज आई, बी हो गया, एल हो गया, आई। आई इज इंटेलिजेंस बिकम्स शॉर्ट साइटेड। जब हम अविद्या में होते हैं, जब इग्नोरेंस में होते हैं, तो हमारा इंटेलिजेंस दूर का नहीं देख पाता है, मे बी अभी का देख पाता है, इमीडिएट का, या ज्यादा ज्यादा 5 साल 10 साल फ्यूचर सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, चाइल्ड के लिए एजुकेशन, ये वो उतना देख पाता है, पर वो श्रेयस के बारे में नहीं देख पाता है। जैसे हमने देखा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गोल, श्रेयस एंड प्रेयस। श्रेयस मतलब दूर का सोचना, लॉन्ग टर्म गोल, आफ्टर डेथ, परलोक सुधारने से पहले परलोक सुधारना है, वो वाली बात होती है श्रेयस। और प्रेयस मतलब अभी, अभी। एक बार राधेश्याम प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि असुर का एक मीनिंग होता है, असुर मतलब क्विक, इमीडिएट, असु, और र मतलब इंजॉयमेंट। तो असुर मतलब राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि असुर मतलब वन हु वांट्स क्विक इंजॉयमेंट, इमीडिएट इंजॉयमेंट, दैट इज असुर। तो जब हम अविद्या या अज्ञान के वश में होते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस शॉर्ट साइटेड हो जाती है और हम दूर का नहीं सोच पाते हैं, या हम जो कर भी रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या कंसिक्वेंस होगा, हम वो नहीं समझ पाते। जैसे भगवान भगवद गीता में कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख यो में एवते आदि अंतम तु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो सच में इंटेलिजेंट है वो ये छोटे मोटे सुख में डिलाइट नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस सुख की वजह से सफरिंग भी आने वाला है। लेकिन जो शॉर्ट साइटेड है, जिसका इंटेलिजेंस शॉर्ट साइटेड हो गया है, विच इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इग्नोरेंस, वो क्या करता है, वो ये नहीं देख पाता है कि अरे इस एंजॉयमेंट में दुखी मिलने वाला है, वो इस एंजॉयमेंट में रम जाता है। ना तेषु रमते बुधा का अपोजिट हो जाता है, वो रम जाता है वो। सो दैट इज आई, इंटेलिजेंस शॉर्ट साइटेड। देन is N. N means not interested in spirituality. वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिनायल का स्टेज डिस्कस कर रहे हैं, पहला स्टेज, राइट। और डिनायल का स्टेज मतलब क्या, कि मेरे वन डज नॉट वांट टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। तो वन ऑफ द थिंग्स ऑफ अविद्या, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अविद्या इज दैट वन डज नॉट वांट टू सरेंडर टू कृष्णा। मतलब कौन कृष्णा भाई, मैं किसी कृष्णा को नहीं जानता हूँ, मैं भाई जो हूँ मैं ही हूँ। So people are sleeping in the lap of Maya and Maya tells them don't surrender. Why will you surrender? तुम क्या कम हो क्या, तुमको अपने बाजुओं पर बाजू बल पर विश्वास नहीं है क्या, तुम होगे भगवान ग्रेट होंगे, तुम भी कम ग्रेट नहीं हो। डोंट सरेंडर टू एनीबडी, दैट्स हाउ माया टेल्स देम। एंड कृष्ण टेल्स भोगेश्वर प्रसक्तानाम त्यापहत चेतसाम एंड समाधौ न विधीयते। कृष्ण इज टेलिंग दैट दोज हु आर अटैच्ड टू मटेरियल सेंस प्लेजर्स, and possessions, opulences, in them a resolute determination to practice Krishna consciousness does not take place. So they are not interested in spirituality. This is the stage of denial.
And D, the D of Agyan, the last symptom of Agyan is that thereby, because of this avidya, because of this Agyan, ignorance, we destroy the opportunity which we have got in the form of human form of life. ये जो मनुष्य जीवन के रूप में, ये हमको जो इतना बड़ा सौभाग्य मिला है मनुष्य जीवन के रूप में, बहुत बार हम इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं, इतनी सारी चीजें सुन लेते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी 1000 तरह के डिवोटीज हैं, 1000 गुरु हैं, 1000 लेक्चर्स हैं, 1000 बुक है, बहुत बार हम कुछ बेसिक चीजें भूल जाते हैं, that how this human life is very very precious. हम DIS क्लासेस में दूसरों को लेक्चर देते हैं, और कभी कभी हम खुद भूल जाते हैं कि मोमेंट आफ्टर मोमेंट वी आर एक्चुअली proceeding towards our death. With every rising and setting of sun, we are getting one day closer to death. जिस तरह मुट्ठी में बालू भरेंगे और बालू हम ज्यादा देर तक मुट्ठी में रख नहीं पाएंगे, वो धीरे धीरे करके गिरेगी, ठीक उसी प्रकार समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है. लाइक दैट नाइस श्लोका व्हिच आई ऑलवेज लाइक टू कोट, काल क्षेपो न कर्तव्यो क्षीणम आयु शने शने यस्य करुणा नास्ति कर्तव्यो हरि कीर्तनात्. एंड दैट्स व्हाई नरोत्तम दास ठाकुर इज आल्सो टेलिंग, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाई. मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया. दैट वी हैव गॉट दिस मनुष्य फॉर्म ऑफ लाइफ, राधा कृष्ण ना भजिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जानिया सुनिया विष खाई. जान बूझकर मैंने विष खा लिया. इट इज लाइक दैट, वेस्टिंग लाइफ टू सच एन एक्सटेंट, जान बूझ के विष खाना. So this is that stage of denial. We all have begun our spiritual journey from the stage of denial, and that is the default state for everybody, wherein we feel that bhaiya, we don't want to practice spirituality. It is not for us. We don't want to practice spirituality. We are too busy with so many other things in life. Kaliya in Srimad Bhagavatam is an example of this. Kaliya. So Kaliya, when he was enjoying in Yamuna, he had his own estate. Yamuna estate. He was enjoying. He was the supreme proprietor of the Yamuna estate. And he was living a nice, lavish life of a king. He had so many servants all around, and he was happy, and he was not at all interested in Krishna consciousness. Later, when he got nice lessons from Krishna, then he said, "Oh, okay, Krishna, now I'll try to serve you." And then the Nagpatnis actually they gave the letter of recommendation to Krishna on behalf of Kaliya. So Kaliya actually symbolizes that state of denial, which we talked about, right? So denial is characterized by avidya, and avidya has these 5 symptoms, 5 characteristics, B, L, I, and D. Okay? So now let's move ahead. So then what happened? हम सबके लाइफ में क्या हुआ इसके बाद? अच्छा, and by the way, as I was telling, that though we may be in stage 4 or stage 5, I'm not talking about the stages of corona. Please don't misunderstand. We are talking about the stages of the journey of bhakti. So though we may be in stage 4 or stage 5, it's not that now we are not worried about stage 1. Actually, it may happen that we may exhibit sometimes some symptoms of stage 1, because our bhakti currently is unstable bhakti. ऐसा नहीं है कि हम निष्ठा के प्लेटफॉर्म पे आ गए और अब हम बता सकते हैं भैया now we are on this stage. नहीं, कभी कभी हम एकदम नॉन डिवोटी जैसा बिहेव करते हैं. कभी कभी अगर आप 2-4 अपने बहुत ही रिच फ्रेंड्स जो कि केवल पैसा और इन्वेस्टमेंट और मनी के बारे में बात करते हैं, उनके साथ 2-4 दिन स्पेंड कीजिए, आपको भी लगने लगेगा अरे यार कहीं हम लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं है, राइट? सो बिकॉज अवर फेथ इज वेरी वेरी फ्रेजाइल राइट नाउ. चाहे हम अपने आप को कितना भी बड़ा डिवोटी समझे, द रियलिटी इज दैट हमको वी आर नॉट येट सीन द ऑनस्लॉट ऑफ माया. Actually, Maya is not taking us very seriously right now. Only after we practice Krishna consciousness for like 10 years, 15 years, 20 years, then we will realize that, when Maya will actually start taking us seriously. Right now, so we are kind of in the lab of Maya only to some extent, like that. Of course, not to mean that we are not endeavoring, we are not sincerely endeavoring, we are, but then we can always exhibit symptoms of the previous stages. So we should always be on guard, is the point. So then, okay, so we begin with the stage of denial. Then what happens? How do we come out of that stage of denial? We come out of that stage of denial by getting knowledge. By getting knowledge, we get access to Divya Gyan. That is the second stage. The first stage was the stage of denial. Second stage is the stage of getting Divya Gyan, right? And then how do we get that Divya Gyan? How do we go from denial to getting Divya Gyan? We go to the stage in 2-3 ways. Either we get some kicks of Maya. इतना kicks of Maya मिला है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारी पाय मुरारे. शंकराचार्य इज प्रेइंग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. बार बार पैदा होना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है.
पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार किसी न किसी माता के गर्भ में हमको यातनाएं भोगनी पड़ रही। यह संसारे बहु दुष्टारे, अरे बाप रे, संसार बहुत मेरे बस का बात नहीं है भाई। आई एम बीइंग टॉस्ड, आई एम बीइंग रिपीटेडली टॉस्ड इन द वेव्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। कृपया पारे पाहे मुरारे, ओ मुरारी प्लीज हैव मर्सी ऑन मी। So either because of getting too many kicks of Maya life after life, one day we realize, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, something has to be done. You know, like that Artho, Bhagavad Gita chapter 7, Krishna talks about 4 kinds of people who come to Krishna, right? Artho, Artharthi, Jigyasu, Jnani. So Artho means what? कि भाई इतना परेशान है बेचारा, वो कृष्ण के पास जाता है। Gajendra is one example. That in his distress, in the state of distress, he automatically remembered Krishna. Artho. Artharthi means you are desiring lot of material opulence, you are desiring lot of material benefit. Dhruv Maharaj is an example of Artharthi. If you remember that story of King Uttanpad and Dhruv Maharaj, you know, Dhruv Maharaj उत्तानपाद ने मना कर दिया ध्रुव को गोदी में बैठने से, अपने पत्नी के प्रेशर में आके। तो उस समय भी पत्नी का प्रेशर होता था, ऐसा नहीं होता था। इमेजिन उत्तानपाद इज द सन ऑफ शंभुआ मनु, शंभुआ मनु के संतान है वो, और उनको भी फैमिली प्रेशर है, you know, just imagine. So that means there are some problems in this material world which will be there everywhere no matter who you are, because this world is दुखालय शाश्वतम। But anyway, so ध्रुव महाराज तो बेचारे उत्तानपाद बहुत प्रेम करते थे ध्रुव से, पर पत्नी के सामने कुछ बोल नहीं पाए, बेचारे कमजोर पड़ गए। तो ध्रुव को इतना गुस्सा आ गया, ध्रुव वी नो दैट हाउ ही वेंट टू फॉरेस्ट टू गेट अ किंगडम which will be greater than his great grandfather ब्रह्मा। So Dhruv Maharaj is therefore an example of Artharthi. Then is जिज्ञासु जो शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में बैठ के सूत गोस्वामी से डिस्कस करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, you know, बताइए थोड़ा हमें। That is an example of जिज्ञासु। ज्ञानी का एग्जाम्पल भी है, जैसे चतुष कुमार, they are example of ज्ञानी, they come to Krishna, they get attracted by the lotus feet of Krishna. So like that, so yeah, we were talking about how denial से हम दिव्य ज्ञान तक कैसे आते हैं। या तो आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी की वजह से आते हैं, या एक डिवोटी हमारे लाइफ में इंटरफेयर करता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। जैसे हम सब की लाइफ में मोस्ट लाइकली ऐसा ही कुछ हुआ है। एक डिवोटी, हम आराम से रह रहे थे, कोई मूवी देखने जा रहे थे, एक आ गया सामने वाला, बोलता है अरे यार मूवी देखने कहाँ जा रहे हो, चलो ये प्रोग्राम चलते हैं, अटेंड करते हैं, यू नो। सो अ डिवोटी कम्स एंड इंटरफेयर इन अवर लाइफ, लाइक एज वी वर डिस्कसिंग समटाइम दैट प्रीचिंग हैज एन इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। Preaching means you disturb one person, you disturb one who is peaceful, and you pacify one who is disturbed. That is one of the nice definitions of preaching. तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हम बड़े सुख से शांति से अपने जीवन में थे, और वो जो सुख और शांति थी वो वास्तविक सुख और शांति नहीं थी, वो इल्यूजन वाली सुख और शांति थी। पर जो भी था हम उसमें थे, और एक डिवोटी ने इंटरफेयर किया, हमको डिस्टर्ब कर दिया, बोला अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मरने वाले, ये होने वाला, वो होने वाला, ये टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी, ये वो, चलो कृष्णा एंड गोल ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट, राइट। सो वी वर डिस्टर्ब्ड, you know, by the interference of a devotee. Then what happened then because of that? Denial से हम दिव्य ज्ञान के स्तर पर आए, स्तर पर नहीं आए, दिव्य ज्ञान मिला नहीं हमको, लेकिन हमको एटलीस्ट थ्योरेटिकली, you know, by attending Discover Yourself session, Positive Thinker, Spiritual Scientist, ये 1000 कोर्स होते हैं, by attending those courses, you know, we got access to दिव्य ज्ञान. We have still not realized दिव्य ज्ञान. So the second stage is, first stage was denial, second stage is we got access to the Gyan, we at least intellectually understood. What did we understood? We understood 4 things. L-I-G-H-T, 5 things, light. Like transcendental knowledge को light से compare किया गया, दिव्य ज्ञान को प्रकाश से compare किया गया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, तो दिव्य ज्ञान को प्रकाश से कंपेयर किया गया है। तो जिस तरह अविद्या को अंधकार से कंपेयर करते हैं, वहां पे हमने BLIND ब्लाइंड एक एक्रोनिम देखा, यहाँ पर हम लोग एक एक्रोनिम देखेंगे LIGHT लाइट, राइट। तो ये जो दिव्य ज्ञान हमको मिला, तो क्या हमको पता चला, व्हाट डिड वी कम टू नो? पहली बात हमको ये पता चली, L, वी लर्न अबाउट द रियलिटीज ऑफ सेल्फ, ऑफ दिस लाइफ, ऑफ दिस वर्ल्ड. You know, we understood the realities. L. The L stands for we learnt about the realities of life, realities of this world, higher truths of life. Like एक बार राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि भगवद गीता का समरी मेरे को बताओ, अगर कोई पूछता है कि मेरे को भगवद गीता का समरी बताओ, तो राधेश्याम प्रभु ने एक बार बहुत अच्छा बताया था कि भगवद गीता टॉक्स अबाउट 4 थिंग्स. अगर आपको किसी नए व्यक्ति को बताना है भगवद गीता में क्या लिखा है, अगर आप उसको बोलोगे ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति, वो भी ठीक है कि भगवद गीता में इन 5 बातों के बारे में बताया गया है, ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति, बट दीज आर 5 टॉपिक्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड.
पर ईश्वर कौन है, जीव क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब बताने के लिए आपको और डिटेल्स में जाना पड़ेगा. दीज आर द 5 टॉपिक्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड, बट स्टिल दीज आर नॉट द आंसर्स, राइट. ईश्वर क्या है वो बताना पड़ेगा, जीव क्या होता है. तो रायशंकर एक बार बता रहे थे, अगर एकदम शॉर्ट में बताना है भविता का क्या 4 मेन संदेश है, तो वो बता रहे थे. पहला संदेश है कि दिस बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल, दिस बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल, वी आर सोल. दूसरा संदेश है दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, हमारा पहले भी लाइफ था और आगे भी लाइफ होने वाला है, री इनकारनेशन एंड एवरीथिंग. तीसरा है दिस वर्ल्ड इज नॉट ऑल इन ऑल. ये तो एक सिंपल एक छोटा सा प्लैनेट है, एक 7th प्लानिटरी सिस्टम है, इसके ऊपर 6 प्लानिटरी सिस्टम है, नीचे 7 प्लानिटरी सिस्टम है. ये तो एक ब्रह्मांड हुआ, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ये पूरा मिला के तो केवल 1/4 हिस्सा है पूरे क्रिएशन का, 3/4 तो असली है, और ये पूरा जेल है, यू नो दीज थिंग्स. एंड देन द 4th थिंग है वी आर नॉट ऑल इन ऑल, देयर इज कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, राइट. सो भगवद टीचर्स दीज 4 थिंग्स. फिर हम समझते हैं कि अच्छा ये जो जगत है ये होटल नहीं है हमारे एंजॉयमेंट के लिए, ये हॉस्पिटल है, ये एक जेल के समान है, जिसका पर्पस है हमको रिफॉर्म करना, हमको क्योर करना. सो जब हमको दिव्य ज्ञान दिमागी तौर पर समझ में आना शुरू होता है दिमाग से, तो ये पहली चीज समझ में आती है. एल, वी लर्न अबाउट द रियलिटीज ऑफ अवर सेल्फ, लाइफ, वर्ल्ड एटसेट्रा. एल. देन होता है आई. आई मतलब कि अब हमको समझ में आता है कि अच्छा हम जो अपना इंटेलिजेंस, अपनी खुद की बुद्धि इस्तेमाल कर रहे थे, हमको अपनी खुद की बुद्धि इस्तेमाल करनी है, बट दैट शुड बी गाइडेड बाय शब्द प्रमाण, गुरु, साधु, शास्त्र. सबको ये डिस्कवर योरसेल्फ का कोर्स में 2nd सेशन याद होगा, गेटिंग द आईज टू सी गॉड, यू नो, और या गेटिंग द आईज टू गेट नॉलेज, व्हाटएवर. तो उसमें हमने देखा है एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, और एक होता है शब्द प्रमाण. तो हमको समझ में आता है अच्छा हम खुद अपनी बुद्धि से प्लस माइनस कैलकुलेट करके दिमाग लगाए काम कर रहे हैं, हमको अपनी बुद्धि लगानी है, बट दैट बुद्धि शुड बी गाइडेड बाय गुरु, साधु, शास्त्र, जस्ट लाइक द चैरियट ऑफ अर्जुन इज बीइंग गाइडेड बाय कृष्णा. भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन के रथ को महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में इधर से उधर ले जा रहे हैं, सही समय पर सही काम करवा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमको अपने जीवन का रथ भगवान को समर्पित करना है. भगवान को अपने जीवन के रथ का सारथी बनाना है, रिक्वेस्ट करनी है, लाइक दैट. सो आई, इंटेलिजेंस शुड बी ड्रिवन बाय गुरु, साधु, शास्त्र. Then comes LIGHT ने G. G means जब हमको जब ये सब सेशन अटेंड करते हैं तो हमको समझ में आता है ओ अच्छा now we understand who is God. God is the supreme CEO. So these days we talk a lot about CEOs, right? इस कंपनी का CEO, इसका फ्लिपकार्ट का CEO, अमेजन का CEO, माइक्रोसॉफ्ट का CEO, ये CEO, वो CEO. और the supreme CEO कौन है? कृष्णा. CEO, controller, enjoyer, owner. CEO, supreme controller, supreme enjoyer and supreme owner. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति विच्छति. कृष्णा सेज इन भगवद गीता, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल sacrifices and austerities, सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द ओनर and controller obviously he says मैं दक्षिणे पसति श्वेते सचाचरम वितुनाने कौन्तेय जगत विपरिवर्तते. So he is the supreme controller. So one gets, so from the stage of denial one comes to the state of divigyan, at least theoretically understanding divigyan, that oh अब समझ में आया, this is the reality of this world, this is I is okay, my intelligence is supposed to be driven by Guru Sadhu Shastra, oh God is the supreme CEO and supreme person. And then H, उसको ये समझ में आता है कि अच्छा पहली बार हमको रियलाइज होता है कि ह्यूमिलिटी इज समथिंग नाइस, कि हमको हम्बल होना चाहिए क्योंकि भगवान महान है और हम एक्चुअली तुच्छ हैं. Why do pure devotees they think they are so humble? Why are pure devotees so humble? Pure devotees are so humble because they are seeing Krishna face to face, because they know Krishna, because they know Krishna and they are realizing how insignificant a living entity is in front of Krishna. Therefore they are naturally humble. जिस हद तक हम भगवान को नहीं जानेंगे उस हद तक हम प्राउड होंगे. एक बार मैं रामानंद सागर का रामायण देख रहा था, मेरा बचपन का बहुत फेवरेट गाना है, यू नो, उसमें आता है, इट्स नॉट अ श्लोका फ्रॉम समवेयर बट देयर इज समथिंग व्हिच आई लाइक, यू नो, दिस सेज, वो जब रावण पहली बार लड़ाई करने के लिए आते हैं राम के पास, तो राम ने जब उनको निहत्था करके वापस भेज दिया था इंसल्ट करके, यू नो, तो उस समय वो रामानंद सागर के रामायण में एक गाना आता है, जब राम विमुख हुआ राम समुख तो अहम ब्रह्मास्मि के पंख जले, तब टूटता है ऊंचाई का भ्रम, जब आता है ऊंट पहाड़ तले. वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दैट रामायण. इट सेज कि जब राम विमुख हुआ राम सम्मुख, रावण वॉज राम विमुख, जब राम सम्मुख हुआ तब अहम ब्रह्मास्मि के पंख चले. वन राइटर वाज टेलिंग देयर आर टू काइंड्स ऑफ फूल्स. One kind of fool is that who thinks that God is like a human being, and the other kind of fool is who thinks that human beings are God. I am God.
There are two kinds of fool in this world. One thing that God is like a human being, and the other thing human being is like God. But anyway, so जब राम विमुख हुआ, राम सम्मुख, तो अहम ब्रह्मास्मि के पंख चले. He used to think that he is God, but then actually you came face to face, रूबरू, rendezvous with God. Then you realize, oh sorry, I was under the illusion. जब तब टूटता है ऊंचाई का भ्रम, जब आता है ऊंट पहाड़ तले. जब ऊंट पहाड़ के सामने आता है तो उसको रियलाइज होता है, अरे बाप रे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. Similarly, so this is actually the crux of humility, that when we see Krishna, to the extent we understand Krishna, to the extent we revive our remembrance of Krishna in our heart, to that extent naturally one will become humble, because he is seeing what is greatness, and he is seeing what is great. So for the first time in his life, this person understands that, oh, there is something called as humility. And we have seen how Vidya Vedati Vinayam, that how real knowledge actually brings humility. Vidya Vedati Vinayam. And Bhagavad also says, this Vidya Vinaya Sampanne, Brahmano Gavihastini, Suni Chaiva Sapakecha Pandita Samadarshina. Vidya Vinaya Sampanne. Vidya and Vinaya, they always go together. So this Vigyan, at least theoretically हमको समझ में आता है, अच्छा, we are supposed to be humble, so at least in Vaishnav circles we start behaving, a Vaishnav would not go in a Vaishnav circle and start boasting about himself. अरे प्रभु जी ये फेस्टिवल तो होने ही नहीं वाला था, वो तो मैं एक एंड टाइम पे आ गया प्रभु जी, मैंने पूरा नैया बचा ली, नहीं तो डूब जाता प्रभु जी सब. अगर एक वैष्णव ऐसा बोलता है तो बाकी सब वैष्णव अंदर के अंदर थोड़ा सा उनको लगता है कि शायद अभी ये थोड़ा समझा नहीं है, हाउ वी आर सपोज्ड टू फील एज वैष्णव. एक बार बैंगलोर टेम्पल में, वहाँ पे एक जगन्नाथ मंदिर है, शशादीपुरम में जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पर रथ यात्रा वगैरह में वी ऑल वर टेकिंग वेरी एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द रथ यात्रा एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स. तो वहाँ के जो सीनियर डिवोटीज थे, एक बार वो लोग उन्होंने रथ यात्रा के जस्ट बाद देयर वाज अ मीटिंग wherein he was discussing that how everything went well, if this Rath Yatra was very successful, and so on and so forth. So he was telling that we should not think that this Rath Yatra became successful because of us. We should think that this Rath Yatra became successful in spite of us. So that is the right consciousness of a devotee. Though he tries his best, though he puts in his best endeavor, yet he does not want to take the credit that, oh, because of me this happened. Rather he thinks that, I have so many disqualifications, I have so many flaws, perhaps I may have done so many wrong things, yet this festival got organized so wonderfully. In spite of me this happened, not because of me this happened. But anyway, so this person from denial now he has come to Divyagyan. He has not got Divyagyan yet, but he has at least through books, through lectures, he is hearing Divyagyan. And then the L-I-G-H, H is humility, and T is, he understands that, oh, from material realm of activities, we have to go to the spiritual realm of activities. Chaitanya Charitamrita, the activities of the living force, in immortality. Prabhupada, अगर आप introduction या preface पढ़ोगे चैतन्य चरितामृत का, तो प्रभुपाद एक बड़ा ही जबरदस्त मीनिंग देते हैं चैतन्य चरितामृत इस टाइटल का. एक तो हो गया कि जैसे रामचरितमानस, वैसा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का अमृत है ये. एक तो वो मीनिंग है. दूसरा मीनिंग है चैतन्य मतलब लिविंग फोर्स, चरित्र मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, and Amrit means immortality. So Prabhupada says, what are the characteristics of a pure spirit soul in spiritual world? What are the activities? How is the spiritual world like? How does he behave? What does he do? So that is what Chaitanya Charitamrita teaches. So for the first time, this person understands that, oh, these are material activities in the material sphere, and then in the spiritual sphere also there are certain activities, and we are supposed to act at the platform of soul. We are supposed to act at the spiritual platform. Now please note, acting at the spiritual platform does not mean not typing on keyboard. So one may be typing on keyboard and acting on spiritual platform. So acting on spiritual platform does not mean nothing to do with matter. It means to do with matter, but understanding its spiritual connection. Right? That's what it means. Right? So what the first stage was denial. Denial was characterized by ignorance. Ignorance had 5 characteristics: B-L-I-N-D, blind. Second stage was that he hears about Divyagyan, and Divyagyan has 5 characteristics: L-I-G-H-T, light. Then what happens? So पहले वो मना कर रहा था, भैया मैं नहीं कर सकता प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियस, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को दूर रखो इससे, तुम लोग करो. That was denial. सेकेंड वॉज, अभी उसने सुना, क्लास सुना, क्यों कोई डिवोटी ने उसके लाइफ में इंटरफेयर किया, या उसको इतना डंडा पड़ा. अच्छा, ये डंडा पड़ने के रिलेटेड में मेरे को एक अच्छा चलो उसको आगे डिस्कस करें. तो उसको इतना डंडा पड़ा, उसने सोचा कि नहीं कुछ तो होगा, जिन लोगों का क्लास अटेंड करना पड़ेगा. तो ही हर्ड दिव्यज्ञान. नाउ व्हाट ही थिंक्स आफ्टर हियरिंग दिव्यज्ञान, he gets to the third stage of disappointment.
What is the third stage of disappointment? The third stage of disappointment means that he hears this, तो इसको बहुत लॉफ्टी लगता है, उसको लगता है बाप रे, बड़े बड़े सेज, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा या अर्जुन जैसे लोग, वो लोग कर लिए, मेरे से नहीं होगा. You know, it is all good, it is very nice, but I can't do it. It's too lofty, too difficult for me. So he expresses his disappointment, at this. And this actually one example, actually Uddhav also demonstrates this example. यही 11th canto में जब लॉर्ड कृष्णा उद्धव को बता रहे हैं, जब कृष्णा बता रहे कि भाई मेरे जाने का समय आ गया है, तो उद्धव बोलते हैं माय डियर लॉर्ड, आई आल्सो वांट टू कम विद यू टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो कृष्णा उद्धव को बताते हैं कि नहीं, आप इधर ही रहिए, एक काम करिए, आप बद्रिकाश्रम जाइए, वहां जाके अपना लाइफ परफेक्ट करिए, उसके बाद हम लोग मिलेंगे. लाइक दैट लॉर्ड कृष्णा टेल्स. देन उद्धव टेल्स 11.7.16. Uddhav tells Lord Krishna in 11.7.16, I am reading the translation. Oh my Lord, I myself am most foolish because my consciousness is merged in the material body and bodily relations, which are all manufactured by your illusory energy. Thus I am thinking I am this body and all of these relatives are mine. Therefore, my Lord, please instruct your poor servant. Please tell me how I can very easily carry out your instructions. So Uddhav is honestly expressing his inability in carrying out the instructions because he is thinking he is too fallen, he is too attached, and he is not able to follow these instructions. So this is a state of disappointment wherein we are saying that मेरे से नहीं होगा ये, this is too high, मेरे को ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा. अच्छा है पर शायद I am too fallen. So this is the third stage of disappointment. Then what he needs at this stage is help and encouragement. Upcoming devotee at this stage, needs help and encouragement. And again I want to repeat, I want to emphasize this point, that ऐसा नहीं है कि now we are past this stage and we are in the 4th or 5th or 6th stage. No, even in our life, if we introspect carefully, some days we are exhibiting symptoms of stage 6 and some days we are exhibiting symptoms of stage 1. Some days we are exhibiting symptoms of stage 2. Therefore, it is very, very important for us to understand that, am I going right? Is the quality of my consciousness improving or is the quality of my consciousness going down? Is my faith in Krishna improving or is my faith in Krishna going down? Am I getting my attraction for material things and material activities, is it increasing or is it going down? My attraction for spirituality, for spiritual world, is it increasing or is it going down? Right? In that connection, we are discussing like that man who is traveling with 10 lakhs rupees cash in his handbag. He will not be completely neglectful of where the handbag is. He will be conscious of where the handbag is and what is happening to that handbag. Similarly, we have to regularly, if not on a daily basis, if not on a 2-day basis, at least on a weekly basis, we have to watch our consciousness. Like we have discussed this several times. There was a famous piano player, जिसने बोला था कि अगर मैं 1 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं तो मुझे पता चल जाता है, 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं तो मेरे गुरु को पता चल जाता है, और 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं तो पब्लिक को पता चल जाता है, कि आज सुर में वो बात नहीं है, आज वो सुर नहीं लग रहा है, like that. So similarly, if we are not practicing Krishna consciousness nicely, the basic principles of Krishna consciousness, ये कुछ basic होता नहीं है actually. ये this is not like some people say Prabhupada lectures में it's only basics, there is nothing. ऐसा नहीं है. These are the very essence, the ultimate perfection. The fact that we are soul, the fact that we have to love and serve Krishna, the fact that how we have to face adversities and reversals in our life. What is a good consciousness? What is a consciousness conducive for Krishna consciousness? What is a consciousness not conducive for Krishna consciousness? And so on and so forth. That's the very thing which is on ground. नहीं तो हवा में तो कोई भी उड़ सकता है. हवा में उड़ने के बाद spirituality is not about floating in air, flying in air. Spirituality is about standing on ground. Standing on ground and elevating our consciousness higher and higher and higher, like that. So therefore, it's very, very important for us to time and again remind ourselves about what are these stages, so that we can inspect through a magnifying glass. We can inspect where are we. Oh, 1 minute. ये मेरे में स्टेज 1 का वायरस किधर से आ गया, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा. Let me do the needful. Let me chant more intensely. Let me hear. Sometimes, when you hear one kind of devotee again and again, maybe one thing gets more and more convincing you, and then you realize, no, now it's too long, I have not heard this kind of a thing. Then you want to go and hear this kind of a thing. You should know which devotees to hear to intensify what aspect of our Krishna consciousness. Krishna consciousness has various aspects, right? So anyway, so then from denial, he goes to hearing the Vigyan. Then from there he goes to the stage of disappointment, where he thinks that ये मेरे से नहीं होने वाला है, मेरे बहुत सारे attachments हैं, बहुत सारे conditionings हैं, मेरे लिए नहीं है, शायद बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा लोग होते होंगे, उनके लिए होगा. Then
comes the next stage of desire. जैसा हम सब जानते हैं, एक बार एक डिसाइपल था, मॉर्निंग वॉक के समय प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने के लिए एक सबसे जरूरी चीज क्या है? तो प्रभुपाद ने उस समय गाड़ी में बैठ रहे थे, प्रभुपाद गाड़ी का गेट बंद भी किया था, जैसे ही उसने पूछा प्रभुपाद ने गाड़ी का गेट खोल के बोला डिजायर, खोल के वापस गेट बंद करके चले गए. सो वी अंडरस्टैंड दैट हाउ if you have to find one most important thing for practicing Krishna consciousness, what is that one most important thing? Is it a marble altar? Is it a big home? Is it a big car? No. What is that one big thing? It is desire to practice Krishna consciousness. That's what is one big thing. So then this devotee, he graduates to this stage of desire wherein, because of the association and encouragement. Remember what was the previous stage? Previous stage was he was saying that mere se nahi hoga ye, I am too fallen. But then when he actually gets some nice devotees, when he gets shelter of some nice devotees, when he gets association, when he gets help and encouragement, when he gets a devotional atmosphere, then he is now willing to practice. He is saying, अरे मेरे तुम्हारे जैसे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ. अच्छा, शादीशुदा व्यक्ति भी कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ. अच्छा, मेरे को माँ बाप को छोड़ना नहीं, अच्छा मैं कर सकता हूँ. You see, so because of the devotional atmosphere, because of association and encouragement, he now says that I want to practice. Desire, I want to practice. और वो अगर आपको याद हो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में जब व्यासदेव डिसअपॉइंटेड होते हैं, व्यासदेव डिसअपॉइंटेड जब होते हैं तो नारद मुनि आकर उनको एग्जाम्पल बताते हैं कि नाउ आई विल टेल यू द पोटेंसी ऑफ एन एटमॉस्फेयर सरचार्ज विद डिवोशनल सर्विस. फिर अपना खुद का एग्जाम्पल नारद मुनि बताते हैं. दैट स्टेटमेंट इज टू बी नोटेड इन श्रीमद् भागवतम. नारद मुनि सेज, आई विल नाउ गिव यू अ केस स्टडी, एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज द potency of an atmosphere surcharged with devotional service. That is the importance of association in our life. कि जब भी disappointment आए, जब भी rejection आए, तो to rekindle our desire, कि नहीं practice करना कैसे नहीं करेंगे, God this gift of bhakti yoga, so then we become willing to practice again. And as I told कि ये ऐसा नहीं है कि हम इस स्टेज को ओवरकम करके अभी 6th स्टेज पे आ गए तो दोबारा ये वाली परेशानी नहीं आएगी. नहीं आएगी, बार बार आएगी. Like once Gopal Krishna Maharaj was telling that the question is not if you fall down, the question is whenever you fall down, whenever you slip, that time what do you do? You know, because if तो ऐसा नहीं कि शायद अगर मैं fall कर गया तो क्या करूंगा. नहीं, होगा, बार बार होगा. Because this world is very very दुष्कर. This material civilization is very very दुष्कर. यह संसारे बहु दुष्टारे, कृपया पारी पाए मुरारी शंकराचार्य चली. So this devotee, this boy, this person, now he has come from denial to hearing the Vigyan to disappointment. Now he has come to desire, wherein he is now willing to practice, and he has understood its importance. लेकिन अभी भी एक कमी है. पता है क्या कमी है? अर्जेंसी नहीं समझ रहा है. वो सोच रहा है कि अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, मुझे करना है, पर क्या करूं, मेरे को अभी ये भी है, वो भी है, करना चाह रहा हूं, पर प्रभु जी क्या करूं, टाइम नहीं मिल रहा है. प्रभु जी अभी जॉब में, अभी मेरे को पीएचडी खत्म करना है. अरे प्रभु जी अभी ये डेडलाइन आ गया, प्रभु जी वो डेडलाइन आ गया. उसको अर्जेंसी नहीं समझ में आ रहा है उसका. कोई ना कोई एक्सक्यूज वो ढूंढ नहीं रहा एक्सक्यूज. ही इज नॉट ट्राइंग टू चीट because he is willing, so he is not finding excuse, but again and again he is getting one genuine excuse or the other. Those of you who have come from voice preaching will remember Kailash drama as a graphic example of this. Narad Muni gives this story in Padma Puran about Kailash. So Kailash में Kailash क्या कर रहा था? पहले बोलता था अरे मैं अभी मेरे को तो जॉब करना है, फिर बोलता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं. फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो बोलता है अरे मेरे जो बच्चे हैं उनके बच्चे छोटे हैं. You know, like that the reasons will never end. So procrastination, like we discussed, कि जब नए हम आते हैं भक्ति में या जब नहीं होते हैं भक्ति में तो माया क्या बोलती है? सरेंडर मत करो. और जब भक्ति में आ जाते हैं तो माया क्या बोलती है? ठीक है कर लेना सरेंडर, बहुत बढ़िया फिलोसफी है, बहुत हाई क्लास फिलोसफी है, कोई मना नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन अभी क्या सरेंडर करने का जरूरत है? बाद में करना सरेंडर. करो कृष्ण सरेंडर करो, बाद में कर लेना ना, अभी क्या जरूरत है सरेंडर करने का. लाइक दैट माया सेज. सो दैट इज दिस स्टेज वेयर इन उसके अंदर डिजायर आ गया प्रैक्टिस करने का कृष्णा कॉन्शियसनेस का, लेकिन माइंड और माया अलग अलग तरह के प्लान्स बना रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए, जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसको अर्जेंसी नहीं रियलाइज हो रहा है, उसको लगता है कि हम ये बाद में कर सकते हैं. माइंड इज प्लेइंग गेम्स. और फिर इस स्टेज के बाद ही कम्स टू द नेक्स्ट स्टेज of actually taking a decision making. This stage is decision making. Denial के बाद hearing दिव्य ज्ञान के बाद disappointment के बाद desire के बाद decision making. और ये decision making क्यों करता है वो? क्योंकि लाइफ में कुछ झटका लगता है.
मैं पर्सनली एक ऐसे अपने मित्र को जानता हूँ, डिवोटी फ्रेंड, आई वुड नॉट लाइक टू टेक अ नेम हियर, बट दिस डिवोटी फ्रेंड ऑफ माइन, it's not that he was not practicing Krishna consciousness properly, but one day he got a heart attack. Can you imagine heart attack? Somebody of my age, मतलब मेरे से 2-3 साल बड़े है वो, तो he got a heart attack, and then he became all the more sincere, all the more serious. I mean, he was already sincere and serious. What I'm trying to say is anything can happen with anyone at any point in time. So जब हमको कोई झटका लगता है ना, तब हमको रियलाइज होता है, अरे बाप रे, कृष्णा कॉन्शियसनेस एन अर्जेंसी. Anybody can die any time. I should rather not postpone. I should not postpone this act of surrender. छोटे छोटे एक्ट, भगवान तो छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं. हम मंगल आरती करें डेली, एक बार कम से कम दिन में एक बार आरती करें. हमको 1000 एक्सक्यूज मिलेगा आरती ना करने का, और एक बार आरती करें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे. हम जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाएं. ऐसे हजारों कारण मिलेंगे हमको, क्या यार छोड़ो अभी कैसे भोग लगाए, कौन लगाए, या छोड़ो यार कैसे भी करके यार मन में हरे कृष्ण महामंत्र बोल के खा देते. गृहस्थ आश्रम फुल ऑफ एक्सक्यूजेस, जेन्युइन एक्सक्यूजेस. बट यही छोटी छोटी चीजों से हम या तो इस पार आ सकते हैं, या ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देकर हम इस पार जा सकते हैं. नाउ दैट्स व्हाट वी हैव टू डिसाइड, एंड इट्स जस्ट अबाउट बीइंग अलर्ट. इट्स ऑल अबाउट बीइंग अलर्ट. नहीं तो जब जोर का झटका धीरे से लगता है, नहीं क्या मतलब जो भी, मतलब पॉइंट है कि जैसे एक बार एक डिवोटी बता रहे थे लेक्चर में कि हम जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, तो पहले थोड़ा दांतों में दर्द चालू होता है, दांत गिरना चालू होता है, जोड़ों में दर्द चालू होता है, बाल सफेद होना चालू होता है. तो भगवान ये छोटा छोटा घंटी बजाते हैं. तो अगर छोटा छोटा घंटी का ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा है, नहीं सुनेंगे तो एक बार बड़ा घंटा बज जाएगा, एंड देन इट विल बी टू लेट. घंटा एक बार में बच जाएगा. तो इसलिए छोटी छोटी घंटी का सिम्टम वी शुड एक्नॉलेज. सो वंस एक स्टोरी है, एक बार एक चोर था, चोरी करके भाग रहा था. तो चोरी करके भाग रहा था, पीछे पुलिस पड़ गई. नहीं तो एम्बुलेंस है, मतलब व्हाटएवर, पुलिस की गाड़ी का जो म्यूजिक होता है. तो पुलिस पीछे पड़ गई चोर के. चोर भाग रहा. पुलिस बोल रही सरेंडर कर दो, हाथ ऊपर करके सरेंडर करो. चोर बोलता है नहीं करूंगा सरेंडर. भागते जा रहा है. उसको लग रहा है कि वो पुलिस से जीत जाएगा, लेकिन भागते वो ऐसा एक डेड एंड पर आ गया जिसके आगे खाई थी. तो इट्स लाइक आगे खाई पीछे पुलिस. दैट सिचुएशन केम. तो व्हेन ही सॉ दैट सिचुएशन कि आगे खाई है पीछे पुलिस है, तो पीछे खड़ा होकर सरेंडर कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉट प्रोएक्टिव सरेंडर बट रिएक्टिव सरेंडर. रिएक्टिव सरेंडर मतलब आपने गुरु साधु शास्त्र का सुन के सरेंडर नहीं किया, अब जब आपके पास कोई चॉइस नहीं बचा है तब आप सरेंडर कर रहे हो. As such, Krishna will accept that surrender also, but we should not wait for that to happen in our life. Let's not wait for calamities to come in our life. क्योंकि मालूम नहीं कैलेमिटी हमारे लाइफ में आएगा तो हमारे अंदर कृष्णा के प्रति सरेंडर करने का डिजायर बढ़ेगा कि कुछ और डिजायर बढ़ जाएगा. वी डोंट नो. वी आर नॉट लाइक कुंती महारानी who can pray for calamities to come and her desire to surrender to Krishna or her attraction to Krishna or her attachment to Krishna will increase because of calamities. We are not कुंती महारानी. हमको अपना रियलिटी पता है. अगर नहीं पता है तो एक कैलेमिटी, जब कोई एक पेपर डेडलाइन आता है या कोई ऑफिस में एक काम का प्रेशर आ जाता है, तो देखो सब कुछ भूल के उसी में पूरा टाइम लग जाता है. या जब एक बीमार हो जाते हैं हम, सिर में दर्द या पेट में दर्द होता है, तो लगता है कि अभी क्या करें कैसे करें. छोटा मोटा कैलेमिटी में हम कृष्णा को भूल जाते हैं, चैंटिंग को भूल जाते हैं, बिकॉज दैट कैलेमिटी प्री ऑक्युपाइज अवर माइंड. व्हाट टू स्पीक ऑफ बिग कैलेमिटीज इन अवर लाइफ. सो इफ माइंड इज टेलिंग अस कि अच्छा जब कैलेमिटी आएगा तब सरेंडर करेंगे, माइंड इज ओनली चीटिंग अस. बेटर यू टेक एडवाइस फ्रॉम गुरु साधु शास्त्र एंड सरेंडर नाउ. Because we have heard that how it is said in English, experience is the best teacher, but the complete saying is experience is the best teacher and the fool learns no other way. जो बेस्ट लोग होते हैं वो सुन के समझ जाते हैं, जो सेकंड बेस्ट लोग होते हैं वो देख के समझ जाते हैं, और जो वर्स्ट लोग होते हैं वो जब खुद के ऊपर बीतती है तभी समझते हैं. Like we know there is example of so many disciples of Prabhupada who at some point in time or the other by some divine arrangement or by some leela or some cause they left Krishna consciousness and then later उनको या तो कैंसर हो गया है या ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से they have immediately come back and took shelter of Krishna again. So but we let us not wait for such calamity to happen in our life. तो जब ऐसा झटका आता है तो ये व्यक्ति सरेंडर करने का डिसाइड करता है. then he makes a decision that oh now I have to surrender. enough postpone कर दिया मैंने, now I have to surrender. गजेंद्र is an example of that. गजेंद्र जब गजराज वो जब हाथी के रूप में जब एंजॉय कर रहे थे अपने पति पत्नियों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, he was the unquestionable king of this entire elephant society and he was the most powerful being on that forest, in that forest. तो एक दिन नहाने गए वो और मगरमच्छ के
जॉर्ज ने जब उनका पैर पकड़ा फिर भी उनको लगा गया इसको तो मैं 2 मिनट में हरा दूंगा, 2 मिनट में 1000 साल वो लड़ते रहे फिर भी नहीं हरा पाए। तब जो इन द जॉर्ज ऑफ क्रोकोडाइल उनको रियलाइज हुआ कि नाउ नथिंग कैन बी डन, ओनली कृष्णा कैन सेव मी, एंड देन दैट टाइम ही सरेंडर टू कृष्णा। सो नाउ ईच वन ऑफ अस आर ऑलरेडी इन द जॉर्ज ऑफ क्रोकोडाइल। एक बार महाराज बता रहे थे, राधानाथ स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि गजेंद्र तो क्रोकोडाइल के जॉ में गया, उसको रियलाइज हो गया, उसने प्रेयर करके सरेंडर कर दिया, पर हम सब क्रोकोडाइल के जॉज में है और हमको रियलाइज ही नहीं हो रहा है हम क्रोकोडाइल के जॉज में है। कुछ नहीं तो कम से कम टाइम रूपी क्रोकोडाइल के जॉ में है हम। और महाराज बता रहे थे कि क्रोकोडाइल का जो दांत है ना, कुछ हैप्पीनेस का दांत है, कुछ दुख का दांत है। हैप्पीनेस और दुख दोनों के दांत के बने हुए जॉज है क्रोकोडाइल के, और उसके जॉज में हम टाइटली कॉट है, लाइक दैट। So then this person in this stage, and maybe we will end this with this stage, I'll just tell what are the other stages and then we will try to continue in the next because it's already 5:38. So in this stage of decision making, because of some jhatka in life, one decides that man, enough is enough, I don't want to postpone anymore, I want to surrender now. Example of this is Gajendra, and then he realizes that spiritual life is no longer an optional question. हम लोग जब स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन पेपर वगैरह देते थे एग्जाम, तो होता था ये चैप्टर में से ये 2 क्वेश्चन आएगा, एक चॉइस वाला क्वेश्चन आएगा। तो पर हमको अब रियलाइज होगा कि भाई स्पिरिचुअल लाइफ इज नो लॉन्गर एन ऑप्शनल क्वेश्चन, इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। एंड इफ यू सी Prabhupada lectures has that speciality. Prabhupada lectures, if you hear, you will see a sense of urgency. When you hear Prabhupada lectures, when you read Prabhupada purport, there is a sense of urgency. We don't want this sense of urgency to die from our heart. We don't want this sense of Mukundamalaa Stotra, Kinkul Shekhar is praying that now, right now I am able to speak, I am able to breathe in and out properly, so let me please chant, because I don't know how long will I survive, like that. So then this devotee, he starts practicing sincerely, he starts doing his sadhana sincerely, he starts rendering service sincerely, and as a result of that his life goes on and he makes ups and downs in devotional service, and then life is very long. He has come to the stage of anartha nivritti now. So if you try to map to the stages of adau shraddha, sadhu sangha, bhajan kriya, anartha nivritti, first stage was denial. Denial is not even adau shraddha. Then he hears Divigyan. This hearing Divigyan is like adau shraddha. He has put some faith, and he has come in the circle of devotees and he is trying to hear something. He is trying to hear the message of Lord. And then he expresses disappointment that he will not be able to practice, but then he develops desire. Because of the sadhu sangha, he develops the desire to practice Krishna consciousness, but he is still thoda ayaram gayaram type. He is a seasonal devotee, Like एक बार बता रहे थे कुछ devotees होते हैं जो जन्माष्टमी मंदिर में आते हैं, बाकी टाइम करते ही नहीं practice Krishna consciousness, like that. So they are called as seasonal devotees, ayaram gayaram types, So ये decision making, फिर ये इसमें he is in the stage of that desire, he wants to practice, but he is postponing. He is not understanding the urgency. Then he comes to the platform of decision making that no, I want to practice now. So now his bhajan kriya starts. Adau shraddha, sadhu sangha, bhajan kriya. Now his bhajan kriya starts. Now once your bhajan kriya starts, then what happens? Cheto darpana marjana. The cleansing process starts. Once you sincerely start applying yourself to the process of sadhana and seva, to the process of Krishna consciousness, then our anartha nivritti starts. The cleaning process starts. And this is said in the 9 stages of bhakti, this is the longest stage. Sometimes it can go all the way till the end of the life. It is the longest stage, anartha nivritti. It may take many lives as well, depending on how intensely, with what energy we are practicing Krishna consciousness. As I said, the energy of practicing Krishna consciousness is not in terms of amount of time. It's not that job work chhodiye, sab kuch chhodiye, Himalaya pe jaiye, then you are very intensely practicing Krishna consciousness. No, the intensity of practicing Krishna consciousness is in attention to details. Please note, intensity of practicing Krishna consciousness is in attention to details. If we are paying attention to every detail that okay, will this please Krishna, will this please Guru, I am doing this, मेरा सोने का टाइम, मेरा उठने का टाइम, मेरा डेली रूटीन, मेरा लाइफस्टाइल, is it pleasing Guru and Krishna? If I am paying attention to that extent I am intently, with intensity, tivrena bhakti yogena, I am intensely practicing Krishna consciousness. So when that happens, then bhajan, then this anartha nivritti happens. एक बार एक व्यक्ति पूछ रहा था, राधानाथ स्वामी महाराज के संदर्भ में पूछ रहा था कि भाई राधानाथ स्वामी महाराज का तो पर्सनल संग प्राप्ति नहीं होता है, तो अगर हमको बोला गया शास्त्रों में कि गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी होता है, तो अभी हमको उनका पर्सनल
Yeah, can somebody Suraj bro you can mute. Yeah. So गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी होता है, उनका पर्सनल संग तो मिलता नहीं। अभी हमको कैसे समझ में आएगा कि हम अपने जीवन में जो निर्णय ले रहे हैं वो उनको प्लीजिंग है कि डिसप्लीजिंग है। एक डिसाइपल को प्रश्न उठा कि जब भी हम अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं, हम हमेशा गुरु को फोन करके पूछ तो नहीं सकते कि गुरु महाराज ये डिसीजन सही है कि गलत। किसी किसी केस में शायद कर सकते हैं, पर हर एक के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है ये। ना हम हो सकता है गुरु के उतने करीब हो, ना हम उनको इतना डिस्टर्ब करना चाहते, लेकिन फिर भी डिसीजन तो लेना है। तो इसका उत्तर यह है कि जब हम उनकी वाणी सुनते हैं, जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, इन जनरल जब उनके इंस्ट्रक्शन सुनते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को जितना केयरफुली, जितना माइन्यूटली, जितना केयरफुली अच्छे से लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिस हद तक वैसा करते हैं, उस हद तक गुरु और कृष्णा हमको बुद्धि देते हैं कि बड़े बड़े डिसीजन भी हम उस प्रकार लेंगे जो उनको प्रसन्न करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? दैट व्हेनेवर whatever instructions we are receiving through the medium of lectures, through Guru Vani, whatever instructions we are receiving through Guru Vani, if those instructions we are very carefully, diligently trying to apply in our life, scrutinizingly and minutely with attention and alertness, to that extent, whenever we have to take any big decision in our life, Guru and Krishna from Guru will inspire us that we will take such a decision which will please them. This is a very nice magic of the connection between Guru and disciples, the spiritual connection between Guru and disciples. So anyway, now that enough liberty starts, there is a very long stage, and in this stage, this devotee goes through further stages, which we will discuss in the next week, part 2. I will just tell what those stages are. The next stage is of doubt. Doubt. Once you keep practicing for a long time, things may start appearing boring. Things may start appearing stagnant. You may wonder, कुछ हो भी रहा है क्या? करते रहा हूँ डेली सोलह माला, पर वो खाली ऐसा टायर ऐसा खाली घूम रहा है कि गाड़ी आगे भी जा रही है। कभी कभी गाड़ी जब धंस जाती है मिट्टी में, रेनी सीजन में मिट्टी में गाड़ी धंस जाती है और एक्सीलरेटर दबाते हो, चक्का घूमता है पर गाड़ी आगे नहीं जाती। तो हमारा माला घूम रही है, माला खटखट करके घूम रही है, पर हम आगे जा रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं बस्ती में। So there are so many doubts which may come in our mind. So that's the next stage of doubt. Then comes the next stage of determination. Then comes the next stage of discovery. And then finally, the stage of delight. So these 4 stages we will discuss in part 2, because I want to really follow suggestion of some devotees, and this is slide 45. We would end here. So let me quickly summarize that in this part 1, what did we discuss? Okay. So the topic what we are discussing is that in our spiritual journey, how do we go through various stages from doubt to faith? That's the topic. Okay. First we discussed that how Bhakti Yoga is the topmost, and Lord Krishna at so many places, and in today's case we saw how we observe that how Bhakti Yoga is the best thing to be done, right? And then we saw that how Bhakti Yoga is like a gift of gold which we have got, and if you are traveling with gold in a train, and gold is so precious, one is naturally very careful when he handles gold. It's not like coal. कोल को आप टन्स में मेजर करते हो और 2-4 कोल इधर उधर गिर भी गया रास्ते में तो कोई केयर नहीं करता है। गोल्ड ऐसा नहीं, गोल्ड को आप मिलीग्राम्स में मेजर करते हो और अगर 2-4 पार्टिकल इधर से हो भी गया तो भी आप केयरफुली उसको रखते हो लाल कारपेट, लाल वेलवेट वाला डिब्बा के अंदर, And then we discussed that how if you are a passenger traveling in a train, if you are traveling with a lot of gold or cash, then you will not be very careless or neglectful about where you have kept the bag. You are not even remembering कहाँ है मेरा बीड बैग, मेरा माला किधर है, भगवान किधर है, ऑल्टर किधर है, मतलब not so graphic, but the point is that you are not worried about your bhakti. ऐसा नहीं होगा. This person every 5 minutes, every 10 minutes he will check बैग ठीक से रखा है क्या. Similarly, we are supposed to introspect, we are supposed to understand that in this entire spectrum of journey, where are we, हम कहाँ आ गए हैं, हम बीच बीच में कहीं कमजोर पड़ रहे हैं क्या, हमको क्या करना चाहिए लाइक दैट. So we discussed about that how we use Google Maps to navigate ourselves when we have to go to a destination using GPS, global positioning system. Similarly, we should use SPS, spiritual positioning system, to navigate ourselves. And in that context, we started with these stages. The first stage was denial. Denial मतलब सामने वाला बोलता है कि भैया मेरे को इससे दूर रखो, स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए नहीं है, I don't want to practice, आप लोग practice करो, like that, right? And this is because of ignorance. And we discussed there are 5 symptoms of ignorance. B, blinded from reality. L, longing for material happiness. I, intelligence is short-sighted. N, not interested in spirituality. And D, destroys the opportunity of human form of life. B-L-I-N-D, blind. One becomes blind. And Kaliya is an example of that. We discussed that, right? Then we discussed that now either a devotee interferes or because of Maya, Artha or Karti Jigyasu Jnana, because of this reason, one becomes favorable to Jyoti with Vijnana. From denial,
gets to Divya, hearing of Divya. And then we discuss that Divya he learns 5 things. Again, Gyan is like torch of knowledge. L-I-G-H-T. L means he learns about the realities of higher truths of life. I means his intelligence, he understands that oh, my intelligence should be driven by Guru, Sadhu, Shastra, Shabda, Brahman. G means he understands that God is the supreme CEO. H means he understands that oh, God is great, I am only a humble, insignificant living entity. And T means he understands that there are material activities and I am supposed to act at the spiritual platform and I am supposed to do spiritual activities. Then from Divya, hearing Divya stage, gets into disappointment stage, wherein he says that मेरे से नहीं होगा ये, मेरे अंदर इतना अटैचमेंट है, इतना कंडीशनिंग है, इतना नरसाज है कि ये मेरे लिए नहीं है, शायद अर्जुन जैसे महान लोग या बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग के लिए होगा, मेरे लिए नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा. At this stage, the devotee needs help and encouragement. And when he gets the devotional atmosphere, then he feels, well, ये भी practice कर पा रहा है, ये भी कर पा रहा है, ये भी कहाँ से कहाँ चला गया, ये भी कहाँ से कहाँ चला गया, मतलब मैं भी अच्छे से practice कर सकता हूँ. With this association and encouragement, he gets to the stage of desire. He is now willing to practice. He says, yes, मैं practice करूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसको लगता है इम्पोर्टेंस समझ में आ गया पर अर्जेंसी समझ में नहीं आया, उसको लगता है बाद में कर सकता है. माया भी उसको कन्विंस कर रही है, अरे अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, अभी सरेंडर करना पर अभी नहीं, बाद में करना. कैलाश का एग्जाम्पल हमने इसमें देखा. Then he gets to the point of, फिर कुछ झटका होता है उसके लाइफ में, कुछ ऐसा होता है इससे उसको रियलाइज होता है नहीं 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 नहीं, now I can't postpone it any further. It's no longer something optional. Now it is a matter of my life and death. I have to surrender now. Let me start very sincerely and carefully practicing Krishna consciousness with all my heart. Sadhana and seva. So आज हमने ये discuss किया. And in next part we will discuss doubt, which is what happens when we go through a long stage of anartha nivritti. Doubt. Then we will discuss determination, we will discuss discovery, and then finally we will discuss the delight, the perfection, Vijnan, we will discuss Vijnan. So we will discuss that in the second part. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai.